Video 8, discussing my daily ritual. I'm explaining all the points so that my family is not ridiculed. Video part 3. Point number 22 of my daily ritual. सुब्रमण्यम उपाध्याय और आत्मानंद के सारे अमानवीय संकल्प निष्फल हो गए हैं. I pray to the pious fire and all the Bhagavans for whom I light 5 diyas in the copper vessel that all the inhumane sankalpas or vows of Subramanyam Upadhyay and Atmanand are aborted. They should not indulge in taking vows that are against dharma. 21st point, मेरा परिवार सुब्रमण्यम और आत्मानंद की कॉन्शियसनेस की गंगा में से निकल गया है और उपाध्याय के ट्रैप में से निकल गया है और सकुशल ईश पुत्र के पास पहुंच गया है. I want myself to be freed and reach another Guru, Ish Putra, Mahasiddha of International Kaulantak Siddha Vidyapith. The 22nd point of my daily ritual. सुब्रमण्यम उपाध्याय और आत्मानंद ने प्लाज्मा प्रोग्रामिंग से अपने पाप वाले गंदे खून से मेरे परिवार का खून गंदा करा है. महापापी सुब्रमण्यम अधर्मी है, मैल प्रैक्टिस करता है. महापापी उपाध्याय अधर्मी है, मैल प्रैक्टिस करता है. महापापी आत्मानंद अधर्मी है, मैल प्रैक्टिस करता है. महापापी अपने पापों की यातना स्वयं भोगता है. With the art of plasma programming, these three Sri Vidya Gurus have first taken the structure of my DNA and implanted it on their plasma. They should not acquire papa karmas of stealing it, so they have implanted their DNA structure, that low quality DNA, that DNA with which they have been doing so many papa karmas, into my plasma. They intend to change my DNA so that they can catch up to my level. They desire to become greater than me by using my DNA structure, by stealing my mind's processing power, by pulling my energies to fill up their system, by implanting my I am over theirs to enter my frequency and evolve. Doing nothing but papa and malpractices. The 23rd point of my daily ritual. सुब्रमण्यम उपाध्याय और आत्मानंद को गुरु के पद से अच्युत कर दिया जाएगा. महापापी सुब्रमण्यम अधर्मी है, मैल प्रैक्टिस करता है. महापापी उपाध्याय अधर्मी है, मैल प्रैक्टिस करता है. महापापी आत्मानंद अधर्मी है, मैल प्रैक्टिस करता है. महापापी अपने पापों की यातना स्वयं भोगता है. These three Vidya Gurus must be dethroned from their designations. They have already blocked themselves from Siddhaloka to do all kinds of malpractices and papa. They have cast away themselves from being known to the great masters. They are gurus in their minds only. The 25th point from my daily ritual. सुब्रमण्यम ने मेरे माइंड के प्रोसेसिंग पावर पे और मेरे सेल्फ पे ब्लैक मैजिक करा है. सुब्रमण्यम ने मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करा है. महापापी सुब्रमण्यम अधर्मी है, मैल प्रैक्टिस करता है. Atmananda's partner Subramanyam is a Sri Vidya Guru and a left-hand tantric. Atmananda did not inform us that he will bring us in the company of a left-hand tantric. We could have got away now. Now we are trapped in the Ganga of their consciousness. It's like being in a wave. We do not know how to tear apart the wave and escape. We are trapped with these gurus. Upadhyay made Subramanyam do black magic on my mind's processing power, on myself and on my family. I'm still carrying the burden of that dark energy. So I informed the pious fire Devata and the Bhagwans by lighting 5 diyas that this has happened to me. 26th point of my daily ritual. उपाध्याय ने मेरे माइंड के प्लेट्स को बदलकर मेरे एवोल्यूशन को पीछे धक्का मार दिया है. उपाध्याय ने मेरी कमाई मुझसे छीन ली है. महापापी उपाध्याय अधर्मी है, मैल प्रैक्टिस करता है. Upadhyay has changed my mind plates and mind triangles that I was born with. The topmost plate, I must have got it with great tapasya. He has changed it.
He has taken away my sincere efforts of my 6 lives of tapasya. No one can get that plate easily. He has taken away my earnings from me. He has also devolved my family and removed them from my closeness. He has promoted the 3 gurus and Atmananda's wife, granted them evolution, removed the sink of my family from me. They wish to separate my family from me and take their position by syncing their minds with mine, to use my energies, become great, and make money. Atman, the 27th point of my daily ritual. आत्मानंदा ने असत्य दृश्य मेरे परिवार की सुषुम्ना में डाले हैं. आत्मानंद ने असत्य दृश्य मेरे परिवार के काल में डाले हैं. कनुभाई, कविता, चेतन, कनिका ने कोई पाप नहीं करा है. मेरे परिवार ने कोई पाप नहीं करा है. सुब्रमण्यम ने असत्य दृश्य मेरे परिवार के काल में डाले हैं. कनुभाई, कविता, चेतन, कनिका ने कोई पाप नहीं करा है. मेरे परिवार ने कोई पाप नहीं करा है. उपाध्याय ने असत्य दृश्य मेरे परिवार के काल में डाले हैं. कनुभाई, कविता, चेतन, कनिका ने कोई पाप नहीं करा है. मेरे परिवार ने कोई पाप नहीं करा है. महापापी सुब्रमण्यम अधर्मी है, मैल प्रैक्टिस करता है. महापापी उपाध्याय अधर्मी है, मैल प्रैक्टिस करता है. महापापी आत्मानंद अधर्मी है, मैल प्रैक्टिस करता है. महापापी अपने पापों की यातना स्वयं भोगता है. The 3 gurus have put their pap karmas in my family's kala, and the visions of those karmas as us committing them in our sushumna. Otherwise, how can such papis or sinners evolve? My family has not committed any crime. The 28th point. कनिका तो बाला है, घर में सबकी लाडली है, भाई बहन में पवित्र रिश्ता है. मेरा बेटा तो अच्छे संस्कार वाला है. कनिका भाई को राखी बांधती है. भगवान काल भैरव सत्य उजागर करे, न्याय हो. They have plans to use girls for occult. But my daughter has been accepted by Tripura Sundari. As soon as Tripura Sundari descended in my chamber of Dashamahavidya, she made me experience pure love for my daughter. But these gurus have separated the sink of my daughter with mine, and Atmananda is promoting his wife as Bala, as my daughter. It's not happening. The 29th point. सुब्रमण्यम उपाध्याय और आत्मानंद का उल्टा बर्तन उनकी कमाई नहीं है. उन्होंने शक्ति को तंग करके, आत्माओं को शरीर से बाहर निकाल के, मेरे परिवार को शक्ति से मार मार के जबरदस्ती अपना उल्टा बर्तन करा है. महापापी सुब्रमण्यम अधर्मी है, मैल प्रैक्टिस करता है. महापापी उपाध्याय अधर्मी है, मैल प्रैक्टिस करता है. महापापी आत्मानंद अधर्मी है, मैल प्रैक्टिस करता है. महापापी अपने पापों की यातना स्वयं भोगता है. Please refer point 4 of video 8 part 1. There is so much more to say. Upadhyay has made drastic changes in existence. It's interference. Someday they will have to pay for it. I will cut their cords. Point 30 of my daily ritual. जिसकी शक्ति उसकी कमाई नहीं है, वह उससे ले ली गई है. न्याय हो, अधर्म का नाश हो. Those that have taken the Shakti of others by either malpractice or by unfair means or without tapasya, someday they will be made to give up their Shakti. They are misusing both the Shakti and the power that comes along. Their minds are not unconditional, and they are promoting unworthy people for other manifestations. Bhagavan Mahavishnu, justice be served. I have shared nothing. There's a lot of malpractice of these 3 Sri Vidya Gurus that remain unexposed. Even though, thanks for what